Good morning friends, welcome to our new class of science, and we have to see a new topic, that is Earth's gravitational force. In this topic, Earth's gravitational force, we will like to see so many types of questions that we come in our mind. So the very first question is, when a particular object or stone, when we throw it in vertically upward direction, then will its velocity changes? Yes or no? Another is, how will it change? If the velocity changes, then how? What is the reason behind it? Another is, why doesn't it move up? Why it continues to move in only vertically upward direction? Why does it come back to the earth? Also, why it comes down, fall after certain height? At reaching a particular height, that stone come back to the earth. Why does it stop at that particular height? And as well, what does its maximum height depends on? Up to what height that particular stone or any object will go in upward direction? All these questions are just based on the one simple topic, that is Earth's gravitational force. In short, we can say the Earth's gravitational force is responsible for all these things which are present here. So let us start. If we consider a particular stone that we want to throw in vertically upward direction, so as we know, the gravitational force exists in between every two objects which are present in the universe. By the way, in this question we are talking just about the earth. So the earth also have the gravitational force, and it will try to pull any object toward its center. So because of this force, when a particular stone or any object is thrown in vertically upward direction, so this gravitational force of the earth will try to pull it toward its center. So that's why initially when we throw a particular object with our hand, initially its velocity is maximum, which is able to against the gravitational force up to a particular height. So but this velocity of that object which are going in upward, it's gradually decreasing, and at a particular height the velocity of that object will comes to be zero. Yes, this because of force, the gravitational force. And after reaching a particular height, the velocity zero of that object, it means that it gets stopped at that point and it returns back to the earth direction, toward the center of earth. This is the reason because of which any object, not only stone but any object, when thrown in vertically upward direction, it has to come back to the earth, towards the center of earth. So all these things are because of the Earth's gravitational force. In simple words, हम ये देख सकते हैं कि जब किसी भी चीज़ को, किसी भी पत्थर को, किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि हम स्पेस में अपवर्ड डायरेक्शन यदि थ्रो करते हैं, तो एक पर्टिकुलर हाइट तक वो जाकर फिर वापस आ जाता है. Why it is so? या फिर क्यों किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि हम ऊपर की तरफ फेंकें तो क्यों वो वापस आता है? वो ऊपर स्पेस में ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाता, वापस धरती पे क्यों आ जाता है? इन सभी के लिए रीजन है अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स. जैसे हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिवर्स में हर दो ऑब्जेक्ट के बीच में प्रेजेंट है. तो दिस थिंग और दिस फोर्स इज आल्सो एप्लीकेबल ऑन द अर्थ आल्सो. सो अर्थ भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करती है हर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर. तो जब हम किसी स्टोन को, किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में यदि थ्रो करते हैं, तो ऐसे केस में वह अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उस पत्थर के ऊपर भी अप्लाई होता है, उस स्टोन के ऊपर भी अप्लाई होता है और उसे अपनी तरफ खींचता है. लेकिन फिर भी क्योंकि हमने उसे कुछ स्पीड के साथ, कुछ वेलोसिटी के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है, तो वह उस ग्रेविटेशनल फोर्स को अगेंस्ट में जाते हुए उसके एक एट पर्टिकुलर हाइट वो अटेंड तो करता है, लेकिन जहाँ पर अर्थ का पुलिंग उस पर भारी पड़ जाता है, वहाँ पर उसका वेलोसिटी, उसकी स्पीड जीरो हो जाती है और वहाँ से वह स्टोन, वो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आना वो स्टार्ट कर देता है. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है और किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, अट्रैक्ट टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, अपनी तरफ खींचने के लिए यह काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है. आई होप
अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स का ये टॉपिक आपको अच्छे से समझाऊंगा। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।